हेलो, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक। ब्यूटीफुल केरला को बाय बाय करते हुए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी। इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया वेयर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन मीट। हमने कैब बुक किया फ्रॉम केरला एंड ट्रस्ट मी, रोड ट्रेवल्स आर दी बेस्ट। जस्ट लुक एट द व्यू। हमने चेक इन किया और हमारे बालकनी से व्यू देखिए। That is Vivekananda Rock Memorial, a landmark where Swami Vivekananda is believed to have meditated. हमारे होटल से सब वॉकेबल डिस्टेंस में था। A massive 133 foot tall statue honoring the renowned Tamil poet. It was around 5 o'clock, beautiful evening, had an amazing time walking beside the sea. The place was so good, vibe was so good, and the view of ocean is at different level. It offers a breathtaking panoramic view of endless blue water. And बहुत सुंदर चर्च देखने को भी मिला. The confluence of the seas offers breathtaking views of the sunrise and the sunset, which are a basic tourist attraction. The only place where you can see the sunrise and the sunset from the site of rising and setting sun to visit to the Vivekananda Rock Memorial and the Thiruvalla statue. यहाँ पे आप घंटों बैठ के ना ऐसे चिल आउट कर सकते हो. The mesmerizing view of the sea. वहाँ से हम ऑटो हायर करके सनसेट व्यू पॉइंट पहुँचे. अ स्पॉट नियर कन्याकुमारी बीच. द सनसेट व्यू पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू वॉच द सन डीप बिलो द ऑरिजिन. द स्काई टर्न्स इनटू वाइब्रेंट ह्यूज ऑफ रेड, पिंक एंड ऑरेंज, क्रिएटिंग अ पिक्चर परफेक्ट मोमेंट. वहाँ पे घंटों लोग बैठे थे जस्ट टू कैप्चर द सनसेट मोमेंट. एंड लास्टली हम अपने होटल पहुँचे. And again, view from the balcony is just so beautiful. Just day 2 in Kanyakumari had a delicious breakfast. फिर हमने स्पेशल फेरी टिकट खरीदा टू विज़िट द विवेकानंदा रॉक मेमोरियल. ये बोट राइड हमें हमेशा याद रहेगा. उस रोज़ संडे था और उस रोज़ बहुत भीड़ था. आई मीन स्कूल से बच्चे आए थे. आई थिंक स्कूल वाले लोग ने स्पेशल ये कुछ बच्चों के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था. And this trip was most memorable. It offers a stunning views of ocean, peaceful meditation hall and a glass bridge. बहुत ही खूबसूरत था. Just look at. It is a unique location where the Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea meet. It is a Gandhi Mandap built to honor Mahatma Gandhi. The Kanyakumari Glass Bridge is India's first ever glass bridge built over the sea. This architectural marvel connects two iconic landmarks, that is the Vivekananda Rock Memorial and the Thiruvalla statue in Kanyakumari. ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा ग्लास ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ा था. एंड इट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर 3 of us. Offers a unique experience walking on a glass bridge with a panoramic view of the ocean and the landscape. Walking on the transparent floor gives a thrilling feeling of floating above the sea. The panoramic view of the three oceans meeting is simply unforgettable. The glass bridge in Kanyakumari is an amazing experience. Standing above with a clear view below feels thrilling and fun. The sea bridge, wide views and the photo spot make it a must-try place. The bridge is well built with marine grade material for safety and durability. It reduces dependence on ferries, making the experience smoother for tourists. A must visit for anyone who loves scenic beauty and architectural marvels. The Triveni Sangam, the scared meeting point of the Indian Ocean, Arabian Sea and the Bay of Bengal. It is believed that taking a holy dip cleans sins and grants spiritual liberation.
Here, three different oceans converge at Kanyakumari, bringing sands of different color, that is yellow, black, and reddish hues. Due to different grain size, the color don't mix, allowing you to see the distant patches of yellow, black, and red sand. This is the Triveni Sangam place. Kumari Amman, also known as Bhagwati Amman, is one of the most scared temple in the world. Considered as one of the 108 Shakti Peethas, is the home of goddess Devi Kanyakumari, referred as the Virgin Goddess. And this is Tsunami Memorial Park. The panoramic view of ocean can be seen. यहाँ पे शाम को आके हम बैठते थे, घंटों बैठते थे. जो वेव्स जो था ना, वेव्स का जो साउंड था ना, इट वाज सो सूथिंग. Yeah, that's it for now. I hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो please do like, share and subscribe my channel. Until then, take care. Bye bye.